Well, Times Now's Shamsher Kent also sent us this report from on board the IAF chopper B-17. The chopper is en route to Reasi and made a stop in Mahar to distribute relief material. I and my camera person Yashpal are right now on board Indian Air Force's Mi-17 helicopter that took off from Jammu Air Base with supplies of relief material for those people, those who are stranded in different parts of Jammu and Kashmir. In fact, this chopper is going to Reasi district in Mahar. This area has been cut off for the past 5 days because of massive landslides. One can clearly have an idea by looking out from this chopper. The very tough terrain already makes it difficult to reach these areas, and these massive landslides and flooding has rendered these areas absolutely inaccessible by any other means than these helicopters. And Indian Air Force has been right on the task since the last 5 days. During the first 2 days, the weather did not permit the authorities to escalate the operations to the level that it required to. But now, for the past 2 days, when the weather cleared up, the authorities have stepped up the relief efforts. Now the authorities tell us that they are sending up to 10 to 20 sorties of these helicopters with relief materials to whatever areas they are required. This chopper, of course, is going to Reasi. There are other areas such as Poonch, Rajouri, Kishtwar and some other areas that are still cut off, and this relief material is required to be sent to those areas. And Indian Air Force right on the job. These sacks contain blankets, tents, medicines, vegetables, food items, whatever is required, whatever may be required by the civil authorities. The administration is being sent these supplies. The Air Force is also coordinating supplies for Srinagar as well, because the state government could not provide boats that were required there to evacuate people from inundated areas. Today, the Indian Air Force was able to send those boats and these choppers to Srinagar airport as well. Now, these supplies are going to be offloaded at Reasi, and wherever required, people are also being evacuated from areas wherever they are stranded. The casualties, the infirm, children and women are given preference. The Air Force authorities tell us that now the weather has opened up. They have escalated these operations, and they also expect that it is going to take some more time given the level of the devastation that these floods have caused in the Jammu region. With video journalist Yash on board this Mi-17 helicopter, Shamsher Kent for Times Now. सर यहाँ पर बहुत खराब हालत है, बहुत मुश्किल से लोग पड़े हुए हैं। क्या मुश्किलें हैं? मुश्किल है सर, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और राशन की सबसे बड़ा किल्लत है। राशन की प्रॉब्लम है सर, सबसे ज्यादा राशन की। हाँ सर, राशन अभी एयरपोर्ट लेकर के आई है। हाँ सर, खाके मर रहे हैं सर, कुछ नहीं है घर में। क्या कितने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर? बहुत है सर, यहाँ तो 200-300 के ऊपर ही ज्यादा लोग आए हुए हैं। कोई बीमार तो नहीं है यहाँ पर लोग? सर बीमार अभी कोई नहीं, अभी तो घरों में पड़े, अभी कोई पता नहीं है उनको। हाँ सर, सड़कें टूटी हुई है, क्या है? क्या हालत है? कोई लोगों में उनका कोई पता ही नहीं है सर, पता ही नहीं है। आप बताइए क्या हालत है यहाँ पर? यहाँ की हालत बहुत नाजुक है। यहाँ पर बारिशों की वजह से लोग काफ़ी गंभीर हैं और लोगों की खस्ता हालत है। ज़मीनें बह चुकी हैं, मकान बह चुके हैं और लोग भी फ्लड में बह चुके हैं। कई लोग जिनका कोई अभी तक कोई मालूमात भी नहीं है और बहुत सारी समस्या है यहाँ पे, और काफ़ी सारे लोग मजबूर हैं। रास्ते खराब हैं, बिजली नहीं है, कनेक्शन नहीं है और कोई भी किसी किस्म की सुविधा नहीं है। इसलिए हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपने आर्मी काफिले से, अपनी एजेंसी से कि वो हेल्प अभी आपके लिए जो दवाइयाँ, खाना वगैरह आ रहा है, ये मिल रहा है आपको? हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और काफ़ी परेशानी है और इस परेशानी का सामना करने के लिए हमारा काफिला हमारी हेल्प करे, हम बहुत ख्वाह हैं। यहाँ पर क्या हालत है तहसीलदार साहब लाहौर में, जहाँ तक ये डेवस्टेशन का सवाल है? यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली पानी बिल्कुल बंद है, लोगों के मकान गिर गए हैं, लोग घर से बेघर हो गए हैं, राशन की बड़ी किल्लत है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन कोई हेल्प कर पा रहा है इनकी? एडमिनिस्ट्रेशन अभी रोड आज शाम तक खुल जाएगा, उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि राशन की सप्लाई जो है रिस्टोर हो जाए, बिजली और पानी की सप्लाई भी हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। We were on board this airport B-17 helicopter that brought supplies from Jammu
Air Force Station to Mahar area of Reasi. This area has been cut off for the past 5 days due to heavy rains that triggered landslides, and these people are in desperate need of these supplies. These supplies contain blankets, tents, medicine, vegetables, food grains, and one can have a sense that, by looking at these people, they have been stranded here for the past over 5 days without adequate supplies, and on the requisition of the civil administration, the Indian Air Force is dropping these supplies to these far-flung areas which otherwise are completely inaccessible by any other means than these helicopters of the Indian Air Force that are reaching these far-flung areas, reaching out to these people who are stranded here without adequate facilities, supplies, food grain, and other essential supplies. Now, these supplies are being offloaded here, and these villagers can have a sigh of relief because of the Indian Air Force, because of the forces, the Indian Army that is coming at their rescue yet again in the hour of crisis. With Yash in Reasi, Camp Times now.